Welcome learners, I welcome you to this third session on capital budgeting. Earlier we had capital budgeting 1 and 2 and so far we have learnt about basics of capital budgeting, how cash outflow and cash inflow are calculated. We also learnt about application of payback period method as well as accounting rate of return method. I will just give a recap of ARR, that is accounting rate of return method. Accounting rate of return method tells us how much percentage return a project will generate every year after considering accounting profit. By accounting profit I mean profit after tax. Let us practice one numerical on that, but my submission is that whenever there is a question on ARR, that is accounting rate of return, always calculate ARR on average investment unless otherwise mentioned in the question. So, if we pay the attention on the whiteboard and look at the numerical which we have with us, we are given like cost of plant 2 lakh rupees, working capital 1 lakh rupees, life is 4 years, salvage value 20,000. So, it is implied salvage value to be realized at the end of 4th year. Profit after tax per annum, that means every year profit after tax will be 30,000 and question is calculate ARR. As explained earlier, whenever simple question is calculate ARR, we will apply the formula of calculating ARR on average investment. Let me write down the formula for you and then we will calculate ARR. Formula is simple. ARR is equal to average profit after tax, that is average PAT upon average investment multiplied by 100. That is our formula for calculating ARR. That is our formula for calculating ARR. Now, average profit. This simply means sum up the profit of all the years and divide by number of years. But in our case what is given? Profit after tax per annum 30,000. So, it simply is an average. Otherwise also if you add up 30,000 4 times, that becomes 1,20,000, divide by 4 you will again get 30,000. So, in this case examiner has given you average profit after tax 30,000. So, हर साल आपको 30,000 रुपये average profit मिलेगा. So, one value is there with you 30,000. Then we have to calculate average investment. Average investment का भी formula आपको last time बताया था, मैं फिर से लिख देता हूँ. Average investment simply is calculated like this: cost of asset, definitely in this case asset is plant, minus salvage value divided by 2, 2 is constant, plus salvage value and plus working capital. Now, if you plug in the values in this formula, you will get average investment. So, my cost of asset is 2 lakh, salvage value at the end of 4th year is 20,000. If I divide it by 2 and then to the result I will be adding back the salvage value which is 20,000 and working capital which is 1 lakh. So, how much I get as an average investment? I will get 90,000, because इससे क्या मिलेगा 1,80,000 divided by 2, 90,000 plus 1,20,000. So, you get it 2,10,000 is your average investment. तो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है प्रोजेक्ट में 2,10,000 रुपये और हर साल आपको 30,000 का प्रॉफिट मिल रहा है. So, 30,000 divided by 2,10,000 multiplied by 100. You can very well calculate the percentage how much ARR you will get it. So, roughly 14.33% and like that. So, that will be your ARR, that will be your ARR. So, this is the way
we calculate ARR on average investment. However, if examiner says calculate ARR on total investment, अब एग्जामिनर ने क्या कर दिया, आपको स्पेल बाउंड कर दिया कि आपको ARR टोटल इन्वेस्टमेंट पे करनी है, क्योंकि जब तक सिंपल ARR बोला था, डिफॉल्ट मीनिंग क्या है, आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट पे ARR कैलकुलेट करनी है. अब आपको टोटल पे कह दिया, तो देखिए सिर्फ फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में चेंज आएगा. इंस्टेड ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट वी विल बी यूजिंग टोटल इन्वेस्टमेंट. एवरेज इन्वेस्टमेंट की जगह आप क्या यूज करेंगे, अब टोटल इन्वेस्टमेंट. और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है प्रोजेक्ट में, 2 + 1 3 लाख रुपीज. So instead of denominator being 2,10,000, now your denominator will be 3 lakh rupees. अब आप ARR कैलकुलेट कर सकते हैं on total investment. Profit after tax does not changes, it will remain 30,000. Total investment is 3 lakh multiplied by 100, you get 10%, and definitely it will be 10% per annum, be calculated by using two different bases. One basis is average investment, another is total investment. So that is the calculation part. Then comes decision making, because in every method we have a scope for the decision making, कि डिसीजन लेना है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें. Is this project financially viable or not? Now, if suppose businessman says I will follow the concept of total investment, how much return it is giving, 10% per annum. अब ये 10% बिजनेसमैन के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, ये बिजनेसमैन खुद बताएगा. One businessman says that I have other competing projects which are giving me less than 10% and my cost of capital is also 6%. Then for that particular businessman, what it becomes? This becomes viable project. Idea is to say, if calculated ARR is greater than or equal to the given benchmark, given desired rate of return, then definitely project will be accepted. तो अगर इस केस में एंटरप्रेन्योर का, कंपनी का, बिजनेसमैन का आइडिया ये है कि माई बेंचमार्क इज less than 10%, say 9%, 8% or 7%, then he is very much willing to invest in this particular project. On the other hand, his benchmark is, let us say 20%, 18%. In that case, this project is giving only 10% return on total investment. So, we will say for that particular businessman or entrepreneur, this project is not acceptable. So, what is the rule? Rule is simple. If calculated ARR is equal to or more than the given benchmark, accept the project. If it is less than that, do not accept it. Similarly, in an examination question, you might be given more than one project, 1, 2, 3, 4, 5. अब आपको कहा जाता है इनको रैंकिंग कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ ARR. तो नॉर्मल कंसेप्ट है, देखिए हायर द बेटर इन केस ऑफ ARR. जिस प्रोजेक्ट की ARR सबसे ज़्यादा है उसको फर्स्ट रैंक देंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड जिसकी सबसे कम है उसको लास्ट रैंक देंगे. सो रैंकिंग विल बी डन, हाईएस्ट ARR गेट्स फर्स्ट रैंक एंड लाइकवाइज इट विल बी देयर. सो दैट इज ARR. सो इन टोटल, under the non discounted cash flow techniques, what we have done, we have learnt about payback period method, we have learnt about ARR method. इन दोनों मेथड में हम क्या करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ध्यान नहीं रखते. पेबैक पीरियड टेल्स मी इन हाउ मच पीरियड माई टोटल इन्वेस्टमेंट विल गेट रिकवर्ड विद द हेल्प ऑफ रेगुलर कैश इनफ्लो, वेयर एज ARR tells me what is my percentage return on investment, either average investment or total investment after considering profit after tax. And out of the whole basket of methods, whether discounted or non discounted, this is the only method, that is the ARR method, in which we use profit after tax. In rest of the methods, we will be using cash inflow for evaluation purpose. I hope you have learnt both of these methods. Sometimes we get question, numerical question also, theory question also. Theory question कैसे होंगे? Define the method,
what are the pros and cons of that method, what are the application, how these are applied, or write down the steps in so and so method. तो वो सब आपको पता है. स्टेप्स में फिर से बता दूं, कभी भी स्टेप्स को बाईपास मत कीजिएगा, शॉर्टकट मत लगाइए. स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट कैश आउटफ्लो, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट कैश इनफ्लो, and then step number 3 apply the method, and last will be decision whether the project is acceptable or not. So, these are the 4 logical steps you have to always follow. So, that was all about non discounted cash flow techniques. Now, we proceed further. What are discounted cash flow techniques or time adjusted cash flow techniques? As the word says, discounted cash flow techniques, it means in these techniques we will be using time value of money and more particularly present value of money. So, what are the different methods under discounted cash flow techniques? We have total 3 methods on the right. You can see that net present value method, profitability index method, and IRR, that is internal rate of return method, that will be there. So, we will focus straightway on net present value method, that is discounted cash flow technique method. Discounted cash flow techniques, as name suggests, whatever cash outflow and cash inflow is there. It means इन methods में भी आपने क्या करना है, सबसे पहले कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करेंगे, कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे, दोनों तरीके के, रेगुलर कैश इनफ्लो एंड टर्मिनल कैश इनफ्लो, और फिर थर्ड स्टेप आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप होगी कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करना, सेकेंड स्टेप कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना, थर्ड स्टेप यहाँ इनबिल्ट आ जाएगी, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ कैश आउटफ्लो सेपरेटली and cash inflow separately, and then apply the method. So, that will be the logical step. Step number 1 calculate cash outflow, step number 2 calculate cash inflow, जैसा आपको पहले बताया गया वैसे ही करेंगे, और थर्ड स्टेप अब आ गई आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है. नाउ क्वेश्चन कम्स फॉर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू विच वाज टॉट टू यू अंडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हमें डिस्काउंट रेट की जरूरत पड़ती है या मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत पड़ती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की. सो इन द क्वेश्चन इटसेल्फ यू विल बी गिवन द रेट, लाइक इफ इट इज क्वेश्चन ऑन नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन or profitability index calculation, then definitely question will tell you what is the cost of capital, either they will say what is minimum required rate of return or what is benchmark rate or what is discount rate. All these are synonymous for calculating present value. So, let us say we are given discount rate 10%, 12%, 15%, anything can be given. Then you will be calculating present value of all the cash outflow and cash inflow using that discount rate. अब present value कैसे calculate होगी, उसके दो तरीके हैं. Either use the table, that is time value table, present value table, or use the formula for calculating present value. So, we will see that also, but let us first understand what is net present value method. The first method उसकी definition देख लेते हैं, उसके criteria देख लेते हैं, steps आपको logical रखनी है, cash outflow, cash inflow and then calculation. So, if you look at the slide, net present value method, the NPV may be described as the summation of present values of cash inflow minus summation of present value of cash outflow. That means आपको करना क्या है, जितने भी कैश इनफ्लो हैं, रेगुलर कैश इनफ्लो जिसको हम CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू करेंगे, निकालेंगे, कौन सी रेट को यूज करके, जो डिस्काउंट रेट आपको क्वेश्चन में दी हुई है. फिर आप कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम केसेस में कैश आउटफ्लो 0 टाइम पे होता है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेम ही रहेगी. लेट अस से अगर हम इसी न्यूमेरिकल को यूज करें, कॉस्ट ऑफ प्लांट इज 2 लाख रुपीज, वर्किंग कैपिटल इज 10,000. कुछ नहीं कहा ये दोनों कब इन्वेस्ट होंगे. Implied meaning is in the beginning, that is at 0 time, 2 lakh plus 1 lakh 3 lakh will be invested in the project. तो इनकी present value क्या होगी, 3 lakh. Whatever may be the discount rate, present value of this 3 lakh will remain 3 lakh. आज जो उसकी present value वही रहेगी, 0 time period. So, step number 1 cash outflow, then we will estimate cash inflow. एंड देन जितने भी कैश इनफ्लो हैं उनकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे जो डिस्काउंट रेट दी गई है.
तो मैं इस न्यूमेरिकल में हाइपोथेटिकली एज्यूम कर रहा हूं, वैसे तो एग्जामिनेशन में दिया होगा, सिंस आप इसको ही एग्जामिनेशन क्वेश्चन मान लीजिए. लेट अस से वी आर गिवन इट लाइक दिस, दैट कॉस्ट ऑफ प्लांट इज 2 लाख, वर्किंग कैपिटल इज 1 लाख, project will generate 30,000 rupees profit after tax per annum and salvage value is 2 lakh. Calculate NPV, that is net present value. अब क्वेश्चन क्या बना दिया, इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे इजीली. अगर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है. कई बार आप देखते हैं कि यार क्वेश्चन बैंक तो है ही नहीं मेरे पास, बुक भी नहीं है, तो मैं सेल्फ प्रैक्टिस कैसे करूं. एक ही क्वेश्चन को आप पांचों मेथड पे लगा सकते हैं. अब मुझे इसमें एज्यूम क्या करना है, डिस्काउंट रेट 10% ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है, एग्जामिनेशन में तो कुछ भी आ सकता है. तो अब आप देखिए कैश आउटफ्लो कौन से हैं आपके जो कि 0 टाइम पे हो रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं दिया, तो वी कैन से इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इज 3 लाख. देन वी हैव टू कैलकुलेट कैश इनफ्लो. सो लेट मी फर्स्ट कैलकुलेट CF80, that is cash flow after tax, which is calculated as profit after tax plus depreciation. Profit after tax plus depreciation. Now in this case we are given profit after tax per annum, that means first year, second year, third year, fourth year सभी सालों में आपको 30,000 का प्रॉफिट मिलेगा. तो एक कैलकुलेशन से ही हम वर्कआउट कर लेंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 30,000 है. नाउ क्वेश्चन कम्स, डेप्रिसिएशन कितना लगाया होगा, क्योंकि जिसने भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया है डेफिनेटली डेप्रिसिएशन जरूर कैलकुलेट करके शो किया होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराइव करने में. सो डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट वी टेक इट स्ट्रेट लाइन मेथड. सो डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, सो एनुअल डेप्रिसिएशन इज सिंपली कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट. कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट. अब आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट प्लांट की कॉस्ट कितनी है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता. सो नेवर कंसीडर वर्किंग कैपिटल फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन. क्यों नहीं लगता, क्योंकि वर्किंग कैपिटल एक तो फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, नंबर 1. नंबर 2, जितने रुपए आपके आज वर्किंग कैपिटल में लगे एंड में आपको वापस मिल जाएंगे, तो उस पर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन ही नहीं बनता. तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पे, कॉस्ट ऑफ एसेट पे लगेगा. माइनस सैल्वेज वैल्यू 20,000 अपॉन लाइफ 4 ईयर्स. इसका मतलब जिसने भी ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया है 45,000 पर एनम का डेप्रिसिएशन लगाया. 45,000 पर एनम का डेप्रिसिएशन लगाया. आपने क्या करना है, प्लस डेप्रिसिएशन, सो यू गेट 75,000 रुपीज पर एनम. हर साल आपको 75,000 का रेगुलर कैश इनफ्लो मिलेगा 4 साल तक. एंड देन वी कैलकुलेट टर्मिनल कैश इनफ्लो. एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, टर्मिनल कैश इनफ्लो मीन्स विच इज रियलाइज्ड व्हेन द प्रोजेक्ट इज टर्मिनेटेड. प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा. अब आप देखिए टर्मिनल कैश इनफ्लो में सैल्वेज वैल्यू आप लेते हैं. सो सैल्वेज वैल्यू इज 20,000 प्लस आपके पास वर्किंग कैपिटल लगी थी 1 लाख की. सो टर्मिनल कैश इनफ्लो विल इंक्लूड सैल्वेज वैल्यू प्लस रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल. सो एट द एंड ऑफ 4th ईयर, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग 75,000 यू विल गेट 1,20,000 एज टर्मिनल कैश इनफ्लो. तो 4th ईयर में 75,000 तो मिलेंगे प्लस 1,20,000 और मिलेंगे. सो योर टर्मिनल कैश इनफ्लो इज 1,20,000. 2 स्टेप्स हो गई. अब तीसरी स्टेप है कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू. और मैंने कहा आपको एग्जामिनर ने दे रखा है डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 10%. So by using 10% discount rate, you have to calculate present value. So now if you calculate present value of total cash outflow, which is 3 lakh, since this 3 lakh is being invested at 0 time, इसकी present value 3 lakh ही रहेगी. Then comes cash inflow की present value निकालना. अब आप cash inflow की present value 2 तरीके से निकाल सकते हैं. एक तो तरीका आप ये रख सकते हैं
How many years we have? 1, 2, 3, 4 and 5. 4 years है, 5 नहीं है. Cash inflow. First year you are getting 75,000. Second year you are getting 75,000. Third year you are getting 75,000. Fourth year में आपको 75 plus 120 मिलेगा. So it will become 1,95,000. It will become 1,95,000. टेबल बना लीजिए. What will be the heading of table? Present value of cash inflow. Sufficient है. Year, cash inflow. Then we will have present value interest factor at the rate of 10%. At the rate of 10%. Present value interest factor at the rate of 10%. Because discount rate is 10%. Now, from where we should get this particular factor? Now, there are two things. If it is an examination question, either the examiner gives the table value within the question. So, you can use that table value, or you can refer to the time value table. So, I will show you how the time value table looks like. So, we have time value table with us, like if you see on this slide, we have time value table. This is the present value interest factor table. On the columns we have the rate and on the rows we have the years. 10% के नीचे देखेंगे आप, आपको टाइम वैल्यू फैक्टर्स मिलेंगे. फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, लाइक दिस. तो मैं 3 डेसिमल तक यूज करूंगा. इफ आई यूज दिस टेबल for 10%, first year's factor is 0.909, second year's factor is 0.826, third year is 0.751 and fourth year is 0.683. आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं. टेबल 4 डेसिमल तक है, बट मैक्सिमम केसेस में हम 3 डेसिमल तक यूज करते हैं एक्यूरेसी पर्पज से. एक्यूरेसी पर्पज से, क्योंकि जनरली मैक्सिमम आंसर्स कैसे होते हैं, उतने ही होते हैं. आपके पास आ गया. अब आपने करना क्या है? PV of cash inflow. Cash inflow multiplied by the time value factor. Cash inflow multiplied by time value factor. Likewise, you will do it. Likewise, you will do it. और जो इनका आंसर आएगा उसको सम अप करेंगे. That will be summation present value of cash inflow. Summation present value of cash inflow. XYZ जो भी वैल्यू आएगी वो आप वहां लिखेंगे. लेट अस से इट इज x. आई एम डिनोटिंग इट एज x क्योंकि इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इजीली आ जाएगा हमारे पास. स्टेप नंबर 3 हो गया. अब आपने क्या करना है? NPV. तो अब आप देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूं. इफ यू लुक एट द स्लाइड, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV इज टोटल PV ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल PV ऑफ कैश आउटफ्लो. एंड उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा व्हाट डज जीरो NPV इंप्लाइज. व्हाट डज जीरो NPV इंप्लाइज. तो इन अवर केस टोटल PV ऑफ कैश इनफ्लो मैंने x लिया क्योंकि हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया. इसको कैलकुलेटर यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देयर इज नो हार्म. एनी टाइम एनी डे इट कैन बी कैलकुलेटेड. एंड आपकी टोटल PV ऑफ कैश आउटफ्लो कितनी है? 3 लाख. टोटल PV ऑफ कैश आउटफ्लो कितनी है? 3 लाख. एंड यू विल गेट द आंसर फॉर NPV. You will get the answer for NPV. Now, once we have the answer for NPV, that is net present value, we have to take a decision. Decision क्या है? प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. If NPV is positive, if NPV is positive, project is accepted. If NPV is negative, project is rejected. इसका मतलब अगर x की वैल्यू 3 लाख से ज्यादा होगी तो NPV पॉजिटिव आ जाएगी. और x क्या है? मेरी सम टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. वेयर एज 3 लाख इज माई PV ऑफ कैश आउटफ्लो. तो अगर NPV पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा. इसका मतलब हम उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी रिटर्न 10% से ज्यादा होगी. नहीं, अगर NPV नेगेटिव है तो व्हाट विल बी देयर? प्रोजेक्ट विल बी रिजेक्टेड. So, that is the way we apply the NPV method. So, let us take a quick break for 1 minute. We will take a break for 1 minute. We will come again, learn the method, again
practice 1 or 2 more numericals, so that you become perfect in that one. So, till then stay tuned, stay connected. A warm welcome to IGNOU. If you are creative, if you can write well, and if you can visualize, mass communication is the correct career option for you. I am going to talk about postgraduate diploma in journalism and mass communication, which is also the first year of MA program in journalism and mass communication. So any learner who has done a postgraduate diploma in journalism and mass communication is eligible to take admission straight away into the second year of our master's program in journalism and mass communication. Duration to complete this program is minimum 1 year, and because we have this inherent flexibility in distance education system, you can take up to 3 years to complete this program. The minimum eligibility criteria for taking admission in this program is bachelor's in any discipline. To give you a glimpse of what are the various components of this program, we begin with telling you what mass communication is, what are the various areas, various branches of mass communication. Then we go on to tell you about the various reporting techniques and beats of reporting, followed by media ethics, the principles, the codes of conduct that you must follow, and we also focus on the writing skills and editing skills for print media. Now, this program comprises of 8 courses of 4 credits each. 25% of the entire program is practical based. So we have 6 theory courses and 2 practical courses. This program is so designed so that it will be able to make you more employable in the market. So it helps you build a career in print media, in radio, television, new media, as well as the allied subjects of mass communication, which could be media marketing, advertising, public relations and corporate communications, event management. This can also help you become an entrepreneur in areas like photography or having your own production house and so on. So I hope that you will be excited to join this program, and we will be waiting to welcome you here in IGNOU. वेलकम बैक लर्नर्स। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक न्यूमेरिकल कर रहे थे, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड यू कैन वेरी वेल सी दैट हमने वैल्यूज कैलकुलेट की थी। अगर आप कैलकुलेशन देखें तो सम टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज 3,19,635। एनपीवी इज टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कितना है? 3,19,635। सो एनपीवी इज पॉजिटिव 19,635। इट मीन्स दिस प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली वाइबल। अगर इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए जाते हैं
तो रिटर्न विल बी मोर देन 10% आफ्टर कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी. रिटर्न विल बी मोर देन 10% आफ्टर कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी. एज सच इसका मीनिंग ये है कि आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपको 10% से भी ज़्यादा की एनुअल रिटर्न मिलेगी. सो दैट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट. नाउ ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक क्वेश्चन पोज किया था कि व्हाट इज द इम्प्लीकेशन इफ एनपीवी इज 0. क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, एनपीवी नेगेटिव है इट मीन्स अगर सेम न्यूमेरिकल है, अगर डिस्काउंट रेट हम मान लो 18% कर दें तो आई एम कॉन्फिडेंट इसकी एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी, तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि एक बिजनेसमैन जिसकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है उसके लिए प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल है. एक बिजनेसमैन जिसकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 18% है उसके लिए प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल नहीं है. जब मैं कहता हूं फाइनेंशियली वायबल नहीं है, मतलब अगर वो इनमें इन्वेस्ट करते हैं, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको 18% रिटर्न नहीं मिलेगी, 18% से कम मिलेगी. अब पॉइंट आता है कि हमने एक डिस्काउंट रेट दिया हुआ था क्वेश्चन में, एनपीवी कैलकुलेट की एंड बाय चांस आंसर ऑफ एनपीवी इज 0. अब 0 एनपीवी का मतलब क्या है? तो अगर हमने ध्यान से फोकस नहीं किया होगा या हम एक विदाउट थिंकिंग आंसर देंगे तो हम कहेंगे 0 एनपीवी मीन्स हमें कुछ भी नहीं मिला, नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 है प्रोजेक्ट की. बट डियर लर्नर्स, ऐसा नहीं है. 0 एनपीवी सिंपली मीन्स that your return will be equal to the discount rate which you have used in calculating NPV. तो मैं अगर हाइपोथेटिकली लूँ कि अगर हम इसमें 12.5% पे NPV कैलकुलेट करें, मुझे पता नहीं है लेकिन मैं हाइपोथेटिकली आपको एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूँ कि अगर हम इन कैश फ्लो को इनफ्लो को यूज करते हुए प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की हमने कौन सी रेट लेके 12.5% लेके. इफ आई यूज 12.5% एंड आंसर इज एनपीवी 0, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी है? 0 है. तो इसका मतलब ये है इस प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यू विल गेट 12.5% रिटर्न और आपकी डिस्काउंट रेट भी वही थी. तो दैट मीन्स यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज गिविंग द रिटर्न इक्वल टू योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. So 0 NPV simply implies that project will give the return equal to the discount rate which has been used in calculating present value of cash outflow and cash inflow. That is the implication of 0 NPV. And 0 NPV also means IRR of the project is this much. Because अगर आप IRR की definition देखेंगे जो मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, IRR means such discount rate at which NPV of the project is 0. इसका मतलब अगर एग्जामिनेशन में आपके पास IRR कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें डिस्काउंट रेट नहीं दी होगी, आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से लॉजिक लगा के IRR कैलकुलेट करनी है और जो IRR कैलकुलेट होगी उस पे अगर आप NPV कैलकुलेट करेंगे तो NPV 0 आएगी. सो दैट इज implication of 0 NPV. So this is the way we calculate NPV. Now question comes, is NPV method foolproof? या इसके कोई नुकसान भी हैं? क्योंकि दिखने में तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसने एक ड्रॉबैक हमारा ओवरकम कर दिया. बिकॉज नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स में क्या ड्रॉबैक थे हमारे, कि टाइम वैल्यू कंसीडर नहीं होती, बट इस मेथड ने तो टाइम वैल्यू कंसीडर कर दी तो ये सुपीरियर लग रहा है. सो वन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट it is superior as compared to payback period method and ARR method because it is considering time value of money. Another advantage is that it takes care of effective return which are realized after considering time value of money. It is sophisticated over and above the non discounted one, but there is a catch. It has got biggest disadvantage also. And biggest disadvantage is that it considers absolute amount of NPV, relative amount को नहीं करता. Absolute और relative का difference मैं आपको बताऊंगा और जैसे ही वो difference समझ में आ जाएगा आप कहेंगे हमें अगला method समझ में आ गया, क्योंकि अगला method क्या है? Profitability index method. NPV method मैंने आपको बता दिया. स्टेप्स में एक रिकैप दे देता हूं, जो ब्रेक से पहले नहीं जुड़ पाए थे फिर से जुड़ रहे हैं. नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में आपको पहली स्टेप लेनी है
कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करने, सेकेंड स्टेप कैश इनफ्लो कैलकुलेट करने, बोथ द टाइप्स ऑफ कैश इनफ्लो, रेगुलर कैश इनफ्लो and terminal cash inflow. Third step, calculate present value of both cash outflow and cash inflow and sum up the PV of cash inflow, क्योंकि inflow में दो component है, regular cash inflow and terminal cash inflow. And then finally NPV is difference between sum total of PV of cash inflow minus sum total of PV of cash outflow. कैश इनफ्लो के प्रेजेंट वैल्यू की टोटल में से आप कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू घटाएंगे तो आपको एनपीवी मिलेगा और फिर डिसीजन लगाएंगे, पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कीजिए, नेगेटिव एनपीवी प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दीजिए. अब आता है रैंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स. ए प्रोजेक्ट विद हाईएस्ट पॉजिटिव एनपीवी इज गिवन फर्स्ट रैंक, देन द सेकंड हाईएस्ट, देन द थर्ड हाईएस्ट एंड द फोर्थ हाईएस्ट, लाइक दैट. सो हाईएस्ट पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट विल गेट द फर्स्ट रैंक, and that is where the disadvantage is there. So, if I simply tell you how to understand this disadvantage, or if there is an examination question with you that explain NPV method and what are the advantages and disadvantages, तो आप एक छोटा सा example भी दे सकते हैं वहाँ पर. Let us quickly do that. Let us quickly do that. दो प्रोजेक्ट हैं X and Y. PV of cash outflow इसमें है 1 लाख, इसमें है 1,50,000, 1.5 लाख. पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 1.1 लाख, तो एनपीवी क्या आ जाएगी इसकी 0.1 लाख, 10,000 रुपए. इसकी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो है 1.61, तो इसके एनपीवी क्या आ गई 0.11 लाख, दैट मीन्स 11,000. मैं रिपीट कर रहा हूं, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो इन दिस इज 1 लाख, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो इज 1,10,000, so NPV is 10,000, that is 0.1 lakh. PV of cash outflow is 1.5 lakhs, PV of cash inflow 1.61 lakhs, तो 1.11 lakhs, 11,000 rupees. As per the ranking rule of NPV, rank क्या चलेगी, this will get the first rank and this will get the second rank. Y को आप फर्स्ट रैंक देंगे, इसका मतलब NPV मेथड क्या कह रहा है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले Y में इन्वेस्ट कीजिए, फिर X में कीजिए. आप कहते हो हमारे पास तो सिर्फ 1,50,000 ही है, तो हम Y में इन्वेस्ट कर देंगे और आपको कितनी NPV मिली 11,000 रुपीज. On the other hand, if you look at the fact, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000 एज कंपेयर टू फर्स्ट प्रोजेक्ट, और उस एक्स्ट्रा 50,000 के बदले आपको एक्स्ट्रा एनपीवी कितनी मिल रही है सिर्फ 1,000 रुपए, क्योंकि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या मिल रहे हैं 10,000 एंड 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट पे मिल रहे हैं 11,000. तो विदाउट हैविंग द फाइनेंस नॉलेज आल्सो आप कहेंगे हाँ यार ये तो बिल्कुल सही है, इट्स रियली राइट दैट ये जो रैंकिंग आई है वो सही नहीं है, क्योंकि 50,000 एडिशनल जो इन्वेस्ट हो रहा है उस पर तो 1,000 ही एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन दैट वन, आई एम बेटर विद दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. सो आइडिया इज दैट NPV method has got a biggest lacuna, biggest drawback, that is it considers absolute amount of value, absolute NPV, that is the biggest drawback. That is why sometimes ranking may not be preferable if NPV method is used. NPV method is used. So, this is the way you can attempt the theory question and defend yourself or get the good marks. So, that was all about NPV method. Now, as there is a biggest lacuna of the NPV method, so there has to be a scope for the improvement also. तो किसी न किसी ने कोई दूसरा मेथड तो डेवलप किया ही होगा, and that method is profitability index method. Now, what profitability index method tells us? Profitability index method, which is also called as benefit cost ratio method, profitability index method which is also called as benefit cost ratio method. It will tell me how much return I will get or businessman will get for every 1 rupee of investment which he has done in the project after considering time value of money.
For example, profitability index of a particular project is 1.25. This 1.25 simply means if you invest, let us say 1 crore or 2 crore or 100 crore, for every 1 rupee you are getting back 1.25 rupees after considering time value of money, and time value of money will be calculated using the desired rate of return, required rate of return, benchmark rate, cutoff rate or discount rate, whatever is specified by the entrepreneur. So, that means now this method does not take into consideration absolute amount. Profitability index becomes a relative measurement जिसको आप comparison के purpose से काम ले सकते हैं. So, profitability index is simply tells me how much return a project will get me for every 1 rupee invested in the project after considering time value of money. अब क्वेश्चन आता है इसको अप्लाई कैसे करें, स्टेप्स क्या रहेंगे, what will be the steps to apply this profitability index method. So, application is simple. Step number 1, calculate cash outflow. जेनरिक स्टेप हो गया, अब तक तो आपको रट गई होगी, रिपीट हो रहा है बार बार. और रिपीटिशन क्यों हो रहा है, बिकॉज रिपीटिशन मेक्स द थिंग्स परफेक्ट, याद हो जाती हैं चीजें. सो कैलकुलेट, क्योंकि सब में कॉमन स्टेप्स हैं. कैलकुलेट कैश आउटफ्लो, कैलकुलेट कैश इनफ्लो. स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. 3 स्टेप्स कॉमन है. दैट मीन्स वट एवर वर द फर्स्ट 3 स्टेप्स ऑफ एनपीवी मेथड, same 3 steps will remain the first 3 steps of profitability index method, which is also called as BCR, benefit cost ratio method. Thereafter, we can calculate profitability index. Now, how do we calculate the profitability index? So, there are 2 measurements. One is gross profitability index and another is net profitability index. One is gross profitability index, another is net profitability index. Gross profitability index is sum total of PV of cash inflow divided by sum total of PV of cash outflow. Sum total of PV of cash inflow, both the cash inflow regular and terminal, divided by sum total of PV of cash outflow. अब अगर हम इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करें, ग्रोस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एंड बाय डिफॉल्ट अगर एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यू हैव टू कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. सो इट विल बी 3,19,635 divided by 3 lakh. So, if you calculate it, you will get an answer like this. .065. I have taken up till 3 decimals. 1.065. This 1.065 means for every 1 rupee invested in this project, आपने तो 3 लाख लगाए, but for every 1 rupee invested in this project, you are getting back 1.065 after considering 10% discount rate. And decision rule says if gross PI is more than 1, project is acceptable. If gross PI is less than 1, project is not acceptable. At gross PI 1, most likely you will accept it, you may be neutral also. Most likely you will accept it because it is giving you your 1 rupee back after considering time value of money. तो अगर हमने 10% डिस्काउंट रेट यूज की है तो एटलीस्ट 10% रिटर्न आपको मिल रही है अगर ग्रोस पीआई 1 है तो. सो द मोमेंट ग्रोस पीआई इज 1, you are getting the return equal to the discount rate used in calculating time value of money. So, gross PI simply is calculated like this. Now, this is helping me out overcoming the drawback of NPV method. So, this is little bit better than or superior than NPV method. So, that is gross PI. Decision rule I have told you. Then we can have net PI, net profitability index. Now, how we calculate the net profitability index? There are 2 ways to calculate net profitability index. Gross PI minus 1 will get you net profitability index. 1.065 minus 1
gets you 0.065, gets you 0.065. This simply means in this 1.065 gross PI, 1 was your own investment and 0.65 was your extra return over and above the discount rate, over and above the discount rate. So, if net PI is positive, if net PI is positive, project is acceptable. Rule remains the same, both gross PI and net PI will give you the constant results. If net PI is positive, accept the project. If net PI is negative, reject it. At 0 net PI, most likely you will accept it, but you may be neutral also. So, that is the one way to calculate net PI. Another way to calculate net PI is like this: NPV divided by PV of cash outflow, NPV divided by PV of cash outflow. So, in our case, what was the NPV? Positive 19,635 divided by 3 lakh. अब यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको पॉजिटिव नेगेटिव जरूर रखना है. इफ इट इज पॉजिटिव पुट पॉजिटिव, if it is negative put negative. Then 19,635 divided by 3 lakh gets you the same answer 0.065, 0.065. But you have to take care, अगर आप second method use कर रहे हैं NPV divided by PV of cash outflow, definitely इसका symbol क्या है, because I have given you the criteria, if net PI is positive then only project is accepted. और बाई चांस अगर ये नेगेटिव थी और आप वहाँ सिंबल रखना भूल गए तो ये आंसर पॉजिटिव आ जाएगा और आपका डिसीजन गलत हो जाएगा. तो कैच इज देयर. सो ऑलवेज यूज द फर्स्ट वन. बहुत ईजी है क्योंकि जो ग्रॉस पीआई आया उसमें से एक ही तो घटाना है. सो दिस इज द वे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड इज अप्लाइड. सो अंडर डिस्काउंटेड कैटेगरी, discounted cash flow category, we have understood about net present value method, we have understood about profitability index method, we have understood about decision criteria under NPV also, under profitability index method also. Then the third method is there under the discounted category. Although there are many more methods, but in total in your curriculum we are covering 5 methods, that is payback period method, accounting rate of return method, also known as average rate of return method, net present value method, profitability index method, and the IRR, internal rate of return. Now, what is IRR? IRR stands for internal rate of return, and definition is such discount rate at which NPV of the project is 0. It means in this kind of question, in which examiner is asking you to calculate IRR, discount rate will not be mentioned, and you will be the one who will be calculating that what is the discount rate at which NPV becomes 0. So, let us say in an examination question, you solve it out, I will tell you how to solve it out. You did the solution and IRR came out to 14%, 14%. This simply implies that yes, if investment in that project is done, the entrepreneur or the businessman will generate 14% return. So, IRR means such discount rate at which NPV of the project is 0. And again decision criteria has to be there, because आपने IRR तो कैलकुलेट कर ली, अब IRR के बेसिस पे वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना. सो यू विल बी ऑलवेज गिवन ए कट ऑफ रेट. अदरवाइज IRR का सिंपल मीनिंग है कि इस प्रोजेक्ट से रिटर्न इतनी मिलेंगी, मुझे इसमें पैसे लगाने हैं नहीं लगाने, ये मेरी डिसीजन है. तो क्या मुझे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए. तो जैसे मैंने आपको कहा एक प्रोजेक्ट हमने लिया, उसकी IRR आ रही है 14%, 14%. एंड इफ यू आस्क मी should I invest in this one, then I will quickly say कि my expectation is 16% minimum. एक्सपेक्टेशन लेवल कैसे तय होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको, फिर हम मेथड पे चलेंगे. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट माई मिनिमम एक्सपेक्टेशन और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 16%. देन डेफिनेटली आई विल से
this project is not financially viable for me. However, it is giving a handsome return of 14%, but मेरे लिए फायदे का नहीं है. And the other businessman, my competitor, who is expecting let us say 11% only, because his 11 is lucky number and for me 16 is lucky number. Lucky number से नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, वह तो मैंने वैसे ही कह दिया. So he is expecting 11%. He will say very well, I will invest in this project, because he was expecting 11%, but he is getting more than 11%. So in an examination question, if we are given cutoff rate, then compare the IRR with the cutoff rate. If calculated IRR is greater than or equal to the given cutoff rate, accept the project. If calculated IRR is less than the given cutoff rate, reject the project. That is the decision criteria. Similarly, if ranking has to be done, highest IRR will get the first rank, then the second highest, third highest and the fourth highest. This is the way ranking is done on the basis of IRR, because IRR again means higher the better, higher the better. Now, question comes, how do we decide what will be my required rate of return? What will be my required rate of return? And required rate of return is based on many factors, which is applicable not only in business purpose, but in your personal life also. Required rate of return, RRR, that is triple R. How do we decide? Cutoff rate or benchmark rate. So, that is risk free rate. It means to say, if I make an investment in risk free avenue. अब आप कहेंगे रिस्क फ्री एवेन्यू कौन सा होता है? जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस और बैंक इज रिस्क फ्री, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री. और यहाँ कौन से रिस्क की बात कर रहे हैं? डिफॉल्ट रिस्क. क्योंकि अगर आप ट्रेजरी बिल्स में पैसा लगाएंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाएंगे, गवर्नमेंट एफडीआर में लगाएंगे, पोस्ट ऑफिस की एफडीआर में या बैंक की एफडीआर में, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिफॉल्ट रिस्क है. सो लेट अस से risk free rate is 6%. Then you add risk premium. If a risky project is there, you need more return. If a less risky is there, you need less return. And if project is zero risk, then आपका risk premium zero है. That means आप risk अगर है किसी प्रोजेक्ट में, तो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ रिस्क आप कितना एक्स्ट्रा रिटर्न चाहते हैं. सो लेट अस से रिस्क प्रीमियम इज 3%. रिस्क प्रीमियम इज 3%. एंड देन यू कैन एड अप प्रीमियम फॉर लॉस ऑफ परचेजिंग पावर. प्रीमियम फॉर लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, जिसको हम बोलते हैं टाइम प्रीमियम, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम रुपए की वैल्यू कम होती चली जा रही है. आज 100 रुपए में जो चीज आप खरीद लेंगे, कल वो 100 से महंगी मिलेगी. सो लेट अस से इन्फ्लेशन इज एट द रेट ऑफ 4%. सो इन्फ्लेशन प्रीमियम, प्रीमियम फॉर लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, टाइम प्रीमियम, कुछ भी कह लीजिए, तब आप कहेंगे माई मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज MIRR, जिसको बोलते हैं RRR भी बोलते हैं, 13%. सो दिस इज द वे ए बिजनेसमैन विल डिसाइड व्हाट इज हिज कट ऑफ रेट, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और मिनिमम डिस्काउंट रेट which he is expecting from the investment. So, dear learners, we have understood about NPV method today, profitability index method today. We have defined IRR method, how decision is done under IRR and how ranking is done. In the next class, I will tell you how IRR is calculated. We will take exhaustive example for calculating IRR, because there is a lengthy practice and step by step we have to calculate that. Once that is over, then we will go for the advanced application of capital budgeting for replacement projects and other projects or mutually exclusive projects. Till then, keep on practicing whatever we have learned. Stay tuned, stay connected with EMPC. Thank you.